Good evening. I thank the Supreme Court for this beautiful judgment. I thank the citizen of India. I thank the people of Goa for being a part of this freedom struggle. That is EVM Hatao Desh Bachao. It shows that struggle by the citizens of India, citizens of Goa, to bring the ballot back. The Supreme Court knows what is the struggle, what people are really fighting for, and Supreme Court have given a very good decision. It is a first step towards success. I request people of India again to be a part of this, and this ballot voting, the way they have said that ballot cast of the ballot will be again given to count, and that will be put it in the ballot again. But this decision, this order has to be implemented this year, 2024 election. They should not have that. I was saying that we have given the decision, but this decision will be applicable for the next election. No. I request the Election Commission to give justice and to stand with the court's order and make this as a practical ballot voting again. And I thank each and every youth, old people, and all the brothers and sisters of our country to stand and fight for ballot voting. Most of the people used to say, "Abhi kaisa hoga? Already ye sab kuch ho chuka hai, and this is not possible." But no, everything is possible. जब लोग जनता citizens की आवाज उठती है, ये बहुत बड़ी आवाज है. ये आवाज को कोई रोक नहीं सकता. ये बहुत बड़ा तूफान है. ये आने वालों को सबको मिटा के चले जाएगा, क्योंकि ये हक की बात है. It is not towards any political party. It was to take the rights of individual. Thank you so much. Once again, I thank the Supreme Court for this order, and this has to be implemented this year 2024 election. Thank you. With all respect to the judiciary, as I always say, that no matter what, that law prevails and truth prevails, and law through judiciary has prevailed. Hats off to each and every person, petitioners who have fought in the Supreme Court. It's not an easy task. त्यांका कितलो त्रास पडला that we can understand. Along with that, all over India, समज India, जे EVM हटाओ देश बचाओ हो नारा घेऊन जे एक ट्रस्ट, एक फेट, एक होप घेऊन जे मुखार सरिल्ले जातले म्हणून त्यांका आणि आमचे गोंयचे टिमाक हांव सगळ्यांक शाबासकी आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूंक सोदता, कित्याक ट्रूथ हॅज प्रिवेल्ड. आतां काल सगळ्यांक बरें दिसलें जेन्ना सांजचें आमकां वाचूंक मेळ्ळें, इट वॉज ऑल ओवर द सोशल मिडिया, that Supreme Court issues notice to ECI on plea to tally all the EVM votes with VVPAT, deposit the VVPAT slip in the ballot box. आतां म्हाका एक कळोंक जाय, यू नो, कोणाच्या आधारान आमी पयलें आसताले, पयलें जेन्ना आमी वोटींग करपाक वतालीं EVM जालें तेन्ना ते ट्रान्सपरंट आसताले, ग्लास आसताले, मागीर ते काळे जाले. सो कोणाच्या आदेशाचेर ते काळे केल्ले. दुसरें, इलेक्शन कमिशन कोणाची कटपुटी जाली आमकां खबर ना. थँक गॉड सुप्रीम कोर्ट खंय तरी होप, आनी सुप्रीम कोर्ट खंय तरी आमकां खंय तरी न्याय मेळटा म्हणून. कित्याक ECI कोणाचेर नासता. कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक ECI वॉज सेयींग दॅट नाका बॅलट वोटींग केलें जाल्यार टायम वतलो. आतां म्हाका सांग, बॅलट वोटींग केलें जाल्यार टायम वतलो जाल्यार एक फेज 7-8 फेज आसता मरे इन द कंट्री. बाय द टायम द इलेक्शन गेट्स ओवर, अडेच म्हयने लागतात. सो इलेक्शनाकूच अडेच म्हयने लागतात जाल्यार वोटिंगाक कित्याक. आनी दुसरें म्हणटा तो मिश्रा म्हणटा तो, ही वॉज वॉकिंग एट अतुल पटेल की धोबे घेवन भोंवता म्हणून. आय एम टेलिंग, अतुल पटेल येयल्लो, भानू प्रताप आयल्लो, आमची टीम आशिल्ली. वी हॅव गॉन टू 5 places where they have shown. तो धब्बा न्ही, मिश्रा सांगतालो, ते धब्बे में सॉफ्टवेअर इज देयर which we saw how it can be manipulated. Anyways, I congratulate each and everyone. आणि truth has prevailed. Now we can say, मेरी पर्ची मेरे हाथ में. We will know whom we are going to vote. We are going to get a slip, and we are going to put in the box. So justice has prevailed. Pratima, has the election commission issued any notification? What is the response? What is the response of the election commission? It is also important. So election commission is not about Supreme Court. It is not about Supreme Court. I think they have to welcome this decision, which is
वीच इज फायद्याक पडटा लोकांच्या हितून इंट्रस्टान, कित्याक हे आमचे पयशे हे आमचे. आनी तुका पयला खबर आसतलें 17 लाख EVM मशिनाक म्हाका दिसता कितें तरी 5,000 कितें तरी कोटी ते मशीन हाडपाक लागतात. तो कोणाचो पयसो? आमचो पयसो. तो तुका बसतलो, तो कोणाक फायदो? सभी भाइयों को सप्रेम नमस्कार और सलाम वालेकुम. मेरा नाम सरफराज है और हमारी जो टीम है ये EVM के जितने भी लूप्स होल हैं या फिर EVM को जो सरकार उसको मैनिपुलेट कर रही है, इसके लिए हम लोग हमेशा ये इनका जो फॉल्ट है हम लोग जाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने. और अभी जो हम लोग ने सुना कल ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आपको बैलेट पेपर भी काउंटिंग करना पड़ेगा 100%. हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर है नरेंद्र मिश्रा, इनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने अपना पक्ष सही तरीके से रखा और सुप्रीम कोर्ट को 2 जजों के बेंच ने इसका ये दिया संज्ञान दिया है कि इसी को उन्होंने नोट लिखा है कि जो भी होगा आगे इसका आपको 100% वोटिंग का करना पड़ेगा. तो ये जो बोला गया है इसका हम लोग एक अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा सा संज्ञान लिया. और इस पे क्या होता है कि हम जो वोटर हैं 140 करोड़ वोटर है, इसमें 90% चाहते हैं कि EVM से इलेक्शन ना हो, बैलेट पेपर से हो. सभी को चाहिए क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टोटल क्लियर सरकार चाहिए. और जो कोई वोट करता है तो वो अपना होली के लिए या फिर किसी और के लिए या फिर फेस्टिवल के लिए नहीं जाता है. वो जाता है कि अपना 5 साल एक अच्छी गवर्नमेंट रखे, अच्छी सरकार बनाए, वो उनका भविष्य सुधारे, बच्चों का भविष्य सुधारे, हॉस्पिटल रोड्स जो भी हो अच्छा करे, इसीलिए वोट करता है. तो हम लोग भी इसी पे है कि आगे आने वाले इलेक्शन हमें देखे 17 मई को इसका आगे होगा. तो हम देखना चाहते हैं कि इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इसका रिप्लाई देती है, या फिर जैसे SBI बॉन्ड किया गया था, हाफ जो डिटेल दिया था हाफ नहीं दिया था, इस तरह से कुछ करती है. तो हम देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑप्शन क्या लेगी. और हम लोग सभी जनता से ये कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए आगे आने वाले इलेक्शन तक. We don't want VVPAT verification because it's being done by machine. We don't believe in that. We want the verification to be done by human. Each voter who is going to cast his vote should get a chance to verify their vote. And each EVM, the votes which are done in each EVM, they should tally with the votes, with the voters are going to be poured in each EVM and each digital unit and VVPAT. That should tally. Otherwise, it is not verification. Only if it tallies, we can say it is verification, and then we can say yes, it is 100% sure or right. Otherwise, it is not fair and free and not transparent. Lots of people say under the impression elections are already declared. Nothing can be done now. Yes, maybe we will have to continue our fights. But do people realize that we could have, after elections be declared, the Supreme Court will have a notice to the Election Commission to consider letting the voters physically to identify the vote? It's something completely out of box, which many of us has not expected this. But we are of the same opinion and faith that some changes will come, not for coming election, but at least for this election. And we have that faith in the Supreme Court order that some changes for sure will happen in this election. Maybe from day one, or maybe for the elections that is remaining in phases. But definitely, we can assure and expect, and many such things will happen good for Goa. Thank you. Election start जालें तेन्ना पहिले बॅलेट बॉक्स चलताले, मागीर एक EVM मशीन म्हणून येयलें. लोकांक पयलें खबर नासलें EVM मशिनाचें कितें चलतालें. थोड्यान आयडेंटिफाय केल्लें आनी तें कळोन येयलें की कितें गडबड चलता म्हणून.
त्याच फाटल्यान सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एकठांय जावन गोंय देखून पावले, आमकां गोंयकारांक देखून अवेअर केले आनी थोडे लोक जाणे जाले कितें चलता तें आनी दाखयलां, प्रूफ दाखयलां, मिशीन हाडून डेमो केले सगळे गांवांनी, मेन सिटी, आनी त्याच्या फाटल्यान कोर्टान पेटिशन चालू आसले. आयज काल आमकां खबर पावली की पेटिशन सुप्रीम कोर्ट जजान हें केलें, म्हणजे दे हॅव एडमिटेड वॉट इज द फॉल्ट. त्याच प्रमाणे आतां आमकां सगळ्यांक खुशालकाय भोगता की कितें डेमोक्रेसी स्ट्रॉंग आसतली म्हणून. कित्याक EVMाचेर लोक सारको भिरांत नासलेलो, आतां लोकांक मातशें कळ्ळें की देर इज ए अटेम्प्ट एंड होप एंड देर वील बी प्रॉपर डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. सो लोकांक हांव उलो मागता, इलेक्शन मुखार देखून फुडल्या इलेक्शनाक देखून 24 देखून तुमी भायर सरपाचें, फाटीं सरपाचें न्हू. इलेक्शनाक मुखार सराय आनी मागीर फाटल्यान कांय उलोवपाक गरज नाका. तुमी पयलें पर्संटेज वाडोवपाक जाय, इलेक्शनाचे पर्संटेज, नॉट जस्ट 50%, 70%, 80% पूण जावपाक जाय. सो लोकांक मागता भायर सराय इलेक्शना दिसांनी, आनी पॉलिटिकल पार्टीज देखून ताका लोकांक सांगून की भायर सराय म्हणून. देव बरें करूं. बेसिकली म्हाका फकत एक दिनवास दिवपाक जाय. मीन फॉर द 3 petitioners, ADR, Associative for Democratic for Reforms, आनी आमचो अरुण म्हणून आहा ताका, आनी आमचो मिश्र आसा. सो हांकां देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर. आनी अबव ऑल आय वॉन्ट टू थँक on all India level basis every person who came on the street, outside, wrote letters and everything to especially Justice B.R. Gowai and Justice Sandeep Mishra. कित्याक आमी एका जाय तो पावट कोल्लो, पूण finally the fight had to go into the Supreme Court. And as Rayeshbhai said, this may not be the 100% victory, but this is the beginning of it. A good start will be a good ending. Dev Bare Karo. Thank you very much. Any questions? एक मिनट. Rais Anju, Anna Gracious, Sarfaraz, Pratima Coutinho, Gilroy, Golda, Almeida, and Anthony De Silva. Sarfaraz surname Sheikh. Thank you. Surname Any question? Gilroy. Costa. Gilroy Costa, Pratima Coutinho, Golda Almeida. Savio